has power to make laws. So that is the power of the state government to make law on those subjects which is there in the state list in Article 245. And there is third list, which is the concurrent list. On the concurrent list, both government, state government as well as the central government, can make the law. So this is the subject matter allocation, meaning thereby you can make laws on this subject if it is within your purview. If it is in the center list, center can make law. If it is in the state list, state only can make the law. If it is in concurrent list, both can make law, but the law is conflicting between the state government and the central government, then the center's government's law will prevail. So this is the scheme with respect to the subject matter. And there is one more scheme that is related to the you can say jurisdictional scheme. And that India central government can make the law for whole of the India, and the state government make the law only for the state, not for the other state. Meaning thereby Haryana can make law for the Haryana territories, not for the UP territories. That is the jurisdictional scheme, which is also the core value of the distribution of the power. And there is some financial distribution of resources, just like GST is collected by sometime in central, how much share will be taken by center and how much share will be taken by the state. It is also written in the constitution. So this is the distribution of the power on which the federalism stands. So federalism stands on the distribution of the power. So just that how many types of the constitution are over there. So there are mainly two types of the constitution. One is unitary constitution, and in unitary constitution all powers centralized in the central government. All power is given to the central government in the unitary constitution. एकात्मक संविधान में सारी शक्ति केंद्रीय सरकार को दे दी जाती है कि आप चाहो जो करो, स्टेट को कोई पावर नहीं है, एंड स्टेट्स आर कंट्रोल्ड बाय द सेंटर्स. सो दिस इज द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और एकात्मक संविधान. Second is the federal constitution, and Indian constitution is assumed as a federal constitution. So in the federal constitution there is the division of powers between center and state governments. So there is the division of power, as I told you, that power are divided between the center as well as between the states. So this is the core feature of the federalism, that if how can we assume, or how can we seek, or how can we find out that which types of constitution it is. If there is a distribution of the power between the center and the state, and equal distribution, somewhat balanced, sometimes 60% power is given to the center, 40% is given to the, so it is the distribution of the power, not unbalanced distribution. If there is the unbalanced distribution, only 10% or 20% power is given to the state and 80% power is given to the center, then it can be said that it is not a federal constitution, it is the unitary constitution. So there are two types of the constitution, and in federal constitution one more thing is over there, that both center as well as the states are independent in their areas or in their jurisdiction or in their spheres. So this is the federal constitution's characteristics. Though we will discuss about the elaborative characteristics of the federal constitution, there are 5 characteristics in the federal constitution. One is just distribution of the power, second is supremacy of the constitution, third is just written constitution, fourth is independence of the judiciary, and fifth is just one more is, and that is the rigid constitution or difficulty in amendment, because the federal constitution cannot be amended very easily. So federal constitution has main 5 characteristics. One is the distribution of the power, that is the very important thing, but rest 4 are also over there. Written constitution, if we can say any constitution as a federal constitution, it should be a written constitution.
Next one is the authority of the judiciary or independence of the judiciary. Judiciary should be independent. Judiciary किसी के अंडर में काम ना करे, फ्री हो, स्वतंत्र हो. And next one is just rigidity in the amendment or difficulty in the amendment. इतना ना हो कि तुरंत ही कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी बदल दे, जल्दी से बदल दे. So there should be some difficulty in the amendment or rigidity in the so difficult process of amendment. And you know that in Indian Constitution there are 3 types of amendment procedure. Few article can be amended very easily, few articles, and few articles are such which require 2/3 majority to be amended, and few articles are such which require the very difficult process to be amended, and that article mainly are related to the federalism. So Indian Constitution is said a federal constitution, but some people say it is not truly a federal constitution. So we will see now the views about the Indian Constitution, that few people say that it is federal, few people say it is not federal, it is the unitary. So Professor K.C. Weir are over here, and he says Indian Constitution is a federal, quasi-federal, not federal, and it is a quasi-federal with unitary features. He says that it is quasi-federal and the unitary features are more in it. It means that he says that states are weak in it. States are given only 30% power, 20% power. Center are given 70% power. So he has such types of view. And there is Professor Jennings, and Professor Jennings says that the Indian Constitution is the federal constitution with strong centralizing tendency. He says that it is a federal, but it has the strong unitary features or strong centralizing tendency, meaning thereby sometime it becomes the unitary constitution. So there are 2 types of the views about the Indian Constitution. Few says it is quasi-federal, few says it is the federal with the strong centralizing tendency. And now we will see the views of the constitution maker who make the constitution. You know that Dr. Ambedkar's view is this, that Indian Constitution is federal despite provision empowering the center. ठीक है ना, center is powerful, but in spite of this Indian Constitution is a federal constitution. So we use the union because Article 1, you know that Article 1 says that India, that is Bharat, shall be the union of the states. So the word union is used instead of the federation in Article 1 to signify what is signified. It says that union is not result of the agreement between the states. So Article 1 says that India, that is Bharat, shall be union of states. Union जो word है, ये जो है ये बताता है कि यूनियन इज नॉट रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट, यानी केंद्र ने या यूनियन ने, जो केंद्रीय सरकार है, उसने और स्टेट ने कोई समझौता करके आपस में मिला नहीं है इंडिया में कि आपने एग्रीमेंट कर लिया भाई हम तुम में मिल जा रहे हैं. तो यूनियन इज़ नॉट रिजल्ट, इंडियन यूनियन या इंडिया जो है समझौतों का रिजल्ट नहीं है कि हरियाणा ने कहा कि भाई हम इंडिया का हिस्सा बन रहे हैं, जो है यूपी ने कहा हम इंडिया का हिस्सा बन रहे हैं, बंगाल ने कहा हम इंडिया, ये नहीं हुआ है. बिकॉज यूनियन इज़ नॉट रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स. पहली चीज़ तो ये आर्टिकल 1 ये बताता है हमें कि जो इंडिया में जो संघ बना है, पूरा इंडिया जिसको हम सेंटर कहते हैं या यूनियन कहते हैं, वो एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है कि बहुत सारी स्टेट ने आपस में समझौता कर लिया भाई हम मिलके एक देश बना ले रहे हैं इंडिया. तो इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स. दूसरी बात ये है, स्टेट कैन नॉट सिसीड फ्रॉम यूनियन, कि राज्य अगर ये चाहे, हरियाणा ये कहे मैं भाई इंडिया से अलग होना चाह रहा हूँ, बंगाल का है कि मैं, ये नहीं कर सकते. दे कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम द यूनियन, तो वो इंडिया से अलग नहीं हो सकते हैं. अब देखिए इसमें जुडिशियल ओपिनियन है कुछ स्टेट ऑफ, अब हमने ये तो समझ लिया डॉक्टर अंबेडकर ने या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या बताया, हमने ये भी देख लिया प्रोफेसर जैनिंग क्या कह रहे हैं, प्रोफेसर केसी वेयर क्या कह रहे हैं, हमने ये भी देख लिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल, कुछ लोग क्वासी फेडरल कह रहे हैं, कुछ लोग जो है यूनिटरी कह रहे हैं, ठीक है ना. तो अब जुडिशियल ओपिनियन क्या है
तो जुडिशियल ओपिनियन है कोर्ट ने क्या कहा है, क्योंकि कोर्ट बड़ी अच्छी बातें करता है, आपको पता है, यू नो दैट कोर्ट ने जो कहा वो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1963, एंड इन दिस केस इट वाज सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फुल्ली फेडरल। 1963 में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इट वाज सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फुल्ली फेडरल, पूरी तरह से फेडरल नहीं है, ये बात आई 1963 में। लेकिन माइनॉरिटी व्यू था, द माइनॉरिटी जजेस व्यू वाज दैट पर्टिकुलरली जस्टिस सुब्बा राव, ही सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर, बट ही वाज लेस इन नंबर। कुछ कम जजों ने कहा कि फेडरल है, और उसमें जज सुब्बा राव ने भी कहा, लेकिन ज़्यादातर का ये मानना था इट इज़ नॉट फुल्ली फेडरल। बाद में कुछ केसेस आए, जैसे स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1968 का केस था, फिर 1976 में एक केस आया सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसमें भी ये बात निकल के आई कि साहब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फाइनली इस बात को एसआर बोम्मई के केस में मेजॉरिटी ने कहा, ये माइनॉरिटी को कुछ जजेस कहते रहे बीच बीच में कि साहब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, लेकिन मेजॉरिटी की राय 1964 तक यही थी कि साहब ये पूरी तरह से फेडरल नहीं है। लेकिन 1994 में मेजॉरिटी ओपिनियन सपोर्ट द फेडरल स्ट्रक्चर। 1994 का जो केस है एसआर बोम्मई केस, इट वाज सेड दैट बाय द मेजॉरिटी ओपिनियन, ज़्यादा जजों ने अब कहा क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, या मेजॉरिटी ओपिनियन सपोर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर। लास्ट में हम एक केस और देख सकते हैं, वी कैन सी हिंसा विरोधक संघ वर्सेज मिर्ज़ापुर मोती कुरैशी जमात 2008 का केस है। इसमें यह कहा कि दो दी कंट्री इज डिवाइडेड इन दी स्टेट्स फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, बट इंडिया इज ए वन इंटीग्रल होल, या कंट्री इज ए वन इंटीग्रल होल। हालांकि हमने एडमिनिस्ट्रेशन की फ़ायदे के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन की आसानी के लिए विभिन्न भागों में बांट दिया इंडिया को, लेकिन फिर भी इंडिया जो है एक अभिन्न भारत है, या अभिन्न देश है, या मतलब एक अकेला जो है इंटीग्रल होल है। तो इसको ये बात इस केस में कही गई। तो ये